फर्स्ट ईयर ऑफ माई एंटायर जॉब, जो भी पैसा मैंने कमाया, सो 1 अप्रैल to 31 मार्च का मैं स्टेटमेंट लेके बैठी, एंड देन आई फिगर्ड आउट कि हाउ मच मनी आई हैव एक्चुअली गॉट, इज द प्लेस वेयर आई हैव स्पेंड, एंड मैंने किस किस चीजों पे खर्च किया है, इज देयर एनी वे दैट आई कुड सेव मोर, एंड दैट्स हाउ इट ऑल बिगिन। एंड मेरे को इन्वेस्ट करना है, पर मैं पैसा लाऊं कहाँ से? तो वो जो पैसा आना है ना, वो आपके बजटिंग से ही आएगा। सो दैट इज व्हाई बजटिंग इज द फर्स्ट स्टेप फॉर योर इन्वेस्टमेंट। सो व्हेन आई वाज वर्किंग विद Citibank, my first job I started in 5,000 का RD. The reason that I named my company as Dignity Management, so that you can manage your own dignity with your retirement money. I realized that there is a gap, कि there are a lot of women out there who don't know anything about finance. मुझे लगता है कि सरकार को हमारे लिए ना ऐसी अपॉर्चुनिटीज बनानी चाहिए कि जहाँ से हम दोबारा से अपना करियर स्टार्ट कर सके। एंड मनी समथिंग मैं पैसा नहीं मैनेज कर सकती या नहीं हैंडल कर सकती। दिस इज अ ह्यूज मिथ दैट women वर्क अराउंड। काफी सारे लोगों की पर्सनल स्टोरी बिकम्स एन अचीवमेंट फॉर मी कि आई हैव बीन एबल टू टेक देम थ्रू द एंटायर जर्नी। सो दैट इज what is inspirational for me. The best investment advice that I would give anybody is to start their investment journey as early as possible. That's my only mission, that I want to empower women with the knowledge of finance. आप काबिल बनिए, कामयाबी तो झक मार के आपके पास आएगी। So I think that is how it is. Where your heart is, where your passion is, that is something that is always going to lead you to success. Welcome back to another episode of Learning Lounge where leaders share, a podcast where we shine spotlight on leaders who are making bold moves, building purpose-driven careers, and leaving a meaningful impact on this world. In this special series featuring co-authors from my book, Women Mavericks, we are celebrating voices that inspire, stories that empower, and journeys that show us what's possible when passion meets purpose. Our guest today is someone who believes that money shouldn't be complicated and definitely shouldn't be something that's intimidating. She's a certified financial planner, an ex-Citibanker turned entrepreneur, and the founder of Dignity Management Pvt Ltd. She's on a mission to simplify personal finances for individuals and families, especially for women. We'll hear more from her on this. From budgeting to wealth creation, she helps people take charge of their money with confidence. She's also the co-author of Women Mavericks, and today we are very happy to hear her story and the journey that she's traversed, her money mantras, and how she's been empowering others to build financial freedom. One smart decision at a time. Please welcome Harshada Singh into the podcast. Hey, Harshada. Hi. Thank you so much for having me here. My pleasure. How are you today? Oh, very well. It's a beautiful morning, and Delhi weather is becoming more pleasant because we recently had a storm. So that's why it's very pleasant here. Glad, good to hear. Even Bangalore has been experiencing some good weather, so I'm hoping weather remains pleasant. Pleasant. So as we begin the podcast, Harshada, we'll start with a very simple but a powerful question. Who is Harshada? I'm very vivacious, extremely lively. I like to be happy. मतलब मुझे खुश रहना पसंद है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी खुश रहे। I'm a mother, I'm a wife, I'm a daughter, and I'm a very loving sister. So that's me. I like to help people. And I can see that from the initial conversations we've had. So Harshada, if we had met you years ago as a child, what would you be seeing? Well, I was very naughty. I was very witty, and I see a lot of that in my son also. Unfortunately, he's not that naughty, jitni naughty मैं थी, but witty definitely. First time I'm hearing a mother say this, that I was more naughtier than my son. So glad to hear it. No, it is very true. So बचपन में क्या होता था, जब भी आप अपने बड़ों से बात करो, ताया जी, मामा जी, मौसा जी, वो सब आपसे कहेंगे कि अच्छा बचपन में तुम ऐसी थी करके। So the other day I was just on a phone call with my mama ji, and I was just asking him कि how was I this naughty करके, and then he told me an incident कि जहाँ पे उन्होंने मुझसे कहा कि when I was in my play school,
मैंने अपनी टीचर को ना उनकी कमर पे एक चूटी काटी थी एंड मैंने उनसे अरे कहा था वाह! कि आपको ना मॉस्किटो ने बाइट किया है, इट्स नॉट मी। सो हाँ, दैट्स हाउ एंड आई सी अ लॉट ऑफ सहर्ष लाइक माय सन, ही इज आल्सो एक्सट्रीमली विटी and he is very vocal, very confident child. So his teacher once told me in a PTM, first PTM of his school, and his teacher told me that, Sarge is a very confident child. He's very vocal about anything and everything. So every class में हर teacher अपने बच्चों को जो है बिठाती है settle down करने के लिए. So she was shouting, कि children please sit down, please don't speak loudly, be quiet, settle down. And then Sarge is like, if you want everybody else to be quiet, why are you shouting in the class? So he's lot he's extremely vocal. very valid question, right? Correct. The change you want to see it happens if you yourself are screaming. How do you expect children to be quiet? Wow. Correct. 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 Yeah. So that's how Harshada Sarge and is. Saharsh. What's Sarge. huh? So Saharsh is, so my name is Harshada and my husband's name is Sumit. So it is a combination of both the names. Sumit ka Sa and Harshada ka Harsh. So Saharsh. Saharsh. Beautiful, beautiful. So Harshada, are there any childhood moments that you can recount that shaped you who you are today? A lot to be very honest, because money is something that we used to. I come from a business background, so dad का business था, and जब हमारे पास में जब उधारी से dad आते थे पैसा लेके, तो any child in our entire family जिसको 1 to 100 काउंट करते आता है, वो गड्डी दे देते थे कि गिनो इसको. And when I today count money, people are very surprised, especially men, कि अरे कितना confidently and कितना फटाफट फटाफट she is counting. Like how is she so hands on with money? So that's one thing. Apart from that, जब मैं छोटी थी ना, तो I used to go for singing classes. और नासिक में एक बेकरी थी अच्छी, जो बहुत अच्छी थी, आदर्श बेकरी. और वहां पे ना मतलब सारी बेकरी प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे मिलते थे. तो दादी ना 40 रुपीज देती थी, 36 रुपीज की खारी आती थी. सो वो जो 4 4 रुपए बचा के, आई यूज टू एंजॉय कि अच्छा ये 4 रुपए इज लाइक माई ओन लेबर कॉस्ट, की जाने आने का मेरा खर्चा है. एंड आई यूज टू सेव दैट 4 रुपीज. And then, one fine day I used to go and buy rings. I was huge fan of buying rings and nail colors and everything. So I suppose that is how, handling money since the beginning has shaped my life a lot. Wow, I can't help but saying, honhar birwani ke hote chikne par. From the Mm. childhood itself, you were so confident with money. No Yeah. doubts you are where you are today. So brilliant, so brilliant. So as I hear, money conversation seems to have been a very common thing in your growing Yeah. up years and stuff. Yeah. Any Yeah. insight you want to share with us that you have with regards to money, apart from the one that you already shared? फर्स्ट ईयर ऑफ माय एंटायर जॉब, जो भी पैसा मैंने कमाया, तो ईयर एंड पे मैं लेके बैठी, फाइनेंशियल ईयर जैसे होता है, एंड नोबडी एक्चुअली टोल्ड मी दिस, बट आई वांटेड टू डू दिस एक्सरसाइज ऑन माय ओन. सो 1 अप्रैल टू 31 मार्च का मैं स्टेटमेंट लेके बैठी, एंड देन आई फिगर्ड आउट कि हाउ मच मनी आई हैव एक्चुअली गॉट, where what is the place where I have spent, and मैंने किस किस चीजों पे खर्च किया है, is there any way that I could save more. And that's how it all began. I mean, I initially started my first salary to, I tell everybody कि आप अगर पहली सैलरी की मिलती है आपको, तो आप इसको पूरा खर्च करिए. मतलब डोंट हेजिटेट एट ऑल, बाय थिंग्स फॉर योर सेल्फ एंड कीप योर सेल्फ ऑल्सो अ प्रायोरिटी. जैसे आप मॉम डैड के लिए चीजें खरीदते ही हो, बट आप अपने लिए भी हमेशा चीजें खरीदिए. एंड देन फ्रॉम सेकेंड सैलरी ऑनवर्ड्स यू कैन प्लान योर फाइनेंसेस बेटर, कि क्या कर सकते हैं एंड हाउ डू यू सेव, एंड द अर्ली यू स्टार्ट द बेटर इट इज. I can't agree with you more. I think I made that mistake. My first salary was a treasure. Yes, I bought Hmm. things for the people that mattered to me in my life. But then that Hmm. tunes your mindset. It's that mindset of Correct. saving. We are not focused on growing. It Hmm. took a very long while to actually start thinking that, what, you need to spend to start earning well. So it's okay to, Correct. spend on yourself. How brilliant. Yeah, yeah, absolutely. And it kind of gives us motivation, and it regenerates you, because आप जब अपने लिए कुछ खरीदते हो, तो you feel happy that you've earned something, you've got something for yourself. It keeps you happy. And happiness is the road to success. If Yeah, you're happy doing absolutely. whatever you're doing, I think you'll do far better. Yes, I totally agree.
And now that we are already talking about doing better in career, please share what your journey towards where you are today in terms of career has been. See, to be very honest, आज जब हम टीवी चैनल्स देखते हैं, you watch shows like DID or Indian Idol or India's Got Talent. Every other contestant somehow has a sad story to sell, and probably people get emotionally attached to it. Honestly, I don't have any such sad story. मतलब touch wood, everything in my life has been a smooth road. I have great in-laws. My family has been great. I come from a very good background. So my life has actually been a very smooth journey कि एक चीज के बाद दूसरा होते गया. And I'm not the kind of person कि who would be sad with something. I like to be happy. So and everybody, honestly, सब किसी की लाइफ में ना volatility होती है, ups and downs होते हैं. Your life can never be all a smooth road. So कुछ ना कुछ तो होता है, but I like to focus on my positives and my happiness rather than being sad and be depressed over something that I have no control over. Lovely. When did this whole thought of, uh, being that financial planner, financial supporter for others, when did that happen? Well, honestly, I don't know, but I somehow, my mama ji is a banker, and my mom and dad both of them went to the same college. So me taking commerce was something that I wanted to do because both my parents were from the commerce background. Banks simply happened, and honestly, जब मैं छोटी थी तो मुझे ऐसा लगा था कि I would want to simply get married, have two kids on my own, and I wanted to be a homemaker because मैंने अपने इर्द गिर्द सब लेडीज को यही करते हुए देखा है that they are homemaker. But then my dad, when I went for the first interview, he never said no to me. It was always a yes for him. So he was a yes parent, कि जो कभी ना नहीं कहते. So I asked him whether I should go for an interview. He said, yeah, go. In case if you get it, then we'll see what happens. So तुम करते रहो, आगे देखेंगे क्या होता है. That was how it went. And very confidently I landed the job. I got the job. I started doing it. And then my slowly and gradually my interest in finance started to come. कि क्या होता है, how important personal finance is. That was one thing that happened. Another thing that I remember, things were changed when after COVID. कि COVID में first earlier everybody was going and visiting doctors. कि how do we get out of this disease. And then later on what happened is कि people who knew that I run an investment firm started coming and asking कि Harshada, I lost my spouse, and I know पैसा हमारे पास है, but I don't know where he's kept the money or where the money is. So I know that I do have funds. He has insurance. He has investments. I just don't know how to get that thing. So that is how I started helping a lot of friends and close family members. And that brought the idea, कि why don't I start posting more videos for women, especially, कि you should know about money. And in case if you have your investments, as a male member, since you are the only one who's earning, I ensure that, whenever I take a financial plan or I discuss the finances in a meeting, I would want the other spouse to be there so that she can understand कि पैसा actually कहाँ है. And a lot of women out there who are earning money, they understand कि हाँ ठीक है पैसा कमाना है, पर उस पैसे को कैसे बढ़ाना है या एक पैसिव इनकम आप कब क्रिएट कर सकते हो और कैसे क्रिएट कर सकते हो is something that is very important. So true, and I so resonate with you. I think that the message that women have to take charge of their own money hit me during COVID only. I'm a coach, Harshada, and आपने बोला कि women came to me, and it was probably 15 days when her husband had passed away. Her statement was, Shanti, I can't grieve because I don't have time to grieve. My husband's body was in front of me. The hospital people were not allowing me to remove the plastic because they were too scared. I know I had to cremate him, but I didn't know where to get the money from. That was Correct. and she's a master. She's a master's in science. Hmm. And she had not worked after she's got married. Now she has an 8-month-old daughter. And uh, she had no clue. कहती मुझे कुछ नहीं समझ आया. I had to turn to my brother and say, can you manage the cremation? Once this is done, I will start to figure out where and How what to do. money has Yeah, to yeah, get yeah. into. You know, that Correct.
that same day, I turned back to my family and said, we need to make a list of all our investments and let our kids know. God forbid हमें कल Correct. कुछ हो जाए, they will be stranded. और तुम्हें कुछ हो जाए, मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे कुछ हो जाए, तुम्हें पता नहीं चलेगा. Exactly. In that situation. So Correct. such a So it wonderful is, thing so, you are doing. yeah, so that is why it is very important कि कि आप सारी चीजें एंड देखो आप इंश्योरेंस लेते हो, आप इंश्योरेंस इसी के लिए लेते हो सो दैट इन केस इफ इन योर एब्सेंस योर फैमिली इज टेकन केयर ऑफ. बट देन दैट फैमिली मेंबर में किसी को तो पता होना चाहिए ना कि एग्जैक्टली क्या है और हाउ यू हैव टेकन केयर ऑफ. सो it is very important. That is why women should be a part of financial discussions. Yeah, yeah. Lovely. So, Harshada, we're still talking about your career times. Yeah. Hmm. Are you able to share a moment when you felt you had to choose between passion and practicality? If yes, how did you navigate? वेल ऑफ कोर्स देयर हैव बीन केसेस बट मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके सामने हमेशा दो रास्ते होते हैं. एक रास्ता होता है जो थोड़ा सा कठिन होता है और एक रास्ता होता है जो बहुत आसान होता है. Hmm. आपको पता है कि दोनों रास्ते पे अल्टीमेटली सक्सेस आपको मिलनी है. किसी में कम मिलेगी, किसी में ज्यादा मिलेगी. बट यू शुड हैव दैट पीस ऑफ माइंड कि आप वहां तक पहुंच पाओ. कठिनाई तो हमेशा ही रहेगी बट देन यू शुड एंजॉय द जर्नी ऑल्सो. वो कहते हैं ना, आमिर खान का एक बहुत फेमस डायलॉग है कि आप काबिल बनिए, कामयाबी तो झक मार के आपके पास आएगी. सो Yeah, I आई agree. थिंक दैट इज हाउ इट इज. वेयर योर हार्ट इज, वेयर योर पैशन इज, दैट इज समथिंग दैट इज ऑलवेज गोइंग टू लीड यू टू सक्सेस. It will take a little more time, it will take a little more hardships in your life, but you will be there. Wonderful. So beautifully put. So beautifully put. So, Harshada, let's talk about our book. Yeah, Hmm. a Hmm. passion project of mine. It has been my first book. How about yours? Okay. Is Oh this yeah, your of first course. book? It is my first book too. I wanted to write a book since a very long time, and the thought of writing a book also came during COVID. Oh, So lovely. I thought कि ऐसा मैं क्या कर सकती हूँ, या काफी बार हम लोग जब परेशान होते हैं ना तो Hmm. हमको ऐसा लगता है कि मतलब क्या हो रहा है जिंदगी में समझ में नहीं आता. पर Yeah. जब पीछे मुड़ के देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि यार इतनी सारी चीजें तो कर ली लाइफ में, अब इससे और ज्यादा कर सकते हैं. बट देन वो एक होप चाहिए होती है. सो Cool. आई स्टार्टेड राइटिंग दिस बुक ओनली एंड ओनली टू इंस्पायर अदर वुमेन आउट देयर हु इज एक्चुअली लुकिंग फॉर अ होप कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो. एंड व्हेन आई रेड द एंटायर बुक, मुझे लगता है कि हर किसी की कहानी ना मोर और लेस वैसी ही है. दैट हाउ वी हैड some hardships in our life and how we are able to overcome them. So Yeah. this book is more of a hope, of an inspiration to any other women who's out there. And मुझे लगता है कि अगर हम में से किसी ने किसी एक लेडी को भी वो एक इंस्पिरेशन या होप दी ना, Yeah. so that's going to be an achievement for Absolutely. all of us. So, हर्षदा, जब भी मैं ये वाले पॉडकास्ट करती हूँ इस सीरीज के, हम्म. किधर ही हम्म. ऊपर ही रखी हुई है, मैं सबसे पहले हम्म. इनका भी पॉडकास्ट होता है ना, उनका मैं चैप्टर फिर से पढ़ती हूँ. And I've read the book at least twice over, Okay. and including my own story, and every हम्म. time I'm reading it, I'm like, wow, what हाँ, inspiration, correct. what motivation, Yes, how wonderful that these women stood for what they truly believed. You know, believe in, right. Hmm. lovely, so beautiful. Um, so Harshada, writing a book is a very personal thing, Correct. and it can Yeah. be challenging. I'd love to know from you, what challenges did you encounter and how did Mhm. you overcome them? Well, being in the finance market, मुझे लगता है कि डेली मार्केट को देखना और ये सारी चीजों में समय निकालना वाज अ चैलेंज. सो आई एंश्योर कि मैं हर रोज रात को बुक लिखूंगी. Okay. अनदर थिंग वाज कि पूरी लाइफ की जर्नी को इतने कम पेजेस में एक कंसोलिडेट करके बताना, दैट वाज अ चैलेंज. And coffee is something that kept me up at night, and my husband had to bear all that tuck 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 on the laptop. So that is how it went, but it was fun, going back to the entire journey again, going back to the same memory lanes. आपको realize होता है कि यार मैंने तो ये भी किया है करके, तो Very, ये क्या ही प्रॉब्लम होगी, आई कैन श्योरली ओवरकम दिस टू. सो very, इट ऑल्सो टर्न्स आउट टू बी अ मोटिवेशन. totally agree. Totally agree. Um,
Was there any other story that really inspired you or moved you in a certain way? Hmm. I liked Jyoti Dora's story, and I really want her to, I mean, I really would like to see her grow more further and, inspire more other moms out there. Her story is something that truly touched me. And maybe, because, I am also mom of a young son. So that is probably, I connected very well with her story. Was it easy to get over the writer's block, start to write your chapter, and how was it like to begin writing? I knew where I had to begin from, Yeah. to ensure, how the journey has started. The only challenge that I had faced was, how to consolidate it in 10 pages. But I was the first one to finish the entire book because, I was extremely excited, कि ये तो मुझे करना ही करना करना ही है करके. है. So I did it in one go, but then, and first probably, but I was very excited to do it. But on the go. Likewise, excitement was what at its peak जब book लिख रही थी मैं भी, and it was all about कि ये भी बता दूं, नहीं, at this page में नहीं आएगा. इसके लिए तो और ज्यादा चाहिए. So it was, yeah, Correct. a lovely experience. Now that one book is out of the way, now Harshada is all confident about writing books. Do we see Yeah. other books from Harshada soon? Well, it's there on the cards. I am going to write a book, but it would be more about finance and finance, which is practical, like real life experiences of my clients, or how, if say for example, if somebody is in a debt trap, how should one exit from that and make their way out. और जैसे काफी बार आपने देखा होगा कि जैसे आपकी शादी हो जाती है ना, आपको पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि अच्छा चलो अब तुम्हारी शादी हो गई है, हम तुम्हारे लिए घर खरीदते हैं, एंड दे आर वेरी रेडी टू गो अहेड एंड डू अ डाउन पेमेंट फॉर अ हाउस एंड से कि डाउन पेमेंट हम कर देंगे, बाकी ईएमआई का तुम देख लेना. सो दीज आर ऑल स्मॉल लिटिल मिस्टेक्स दैट वी टेंड टू डू, कि आपकी जस्ट शादी हुई है, आपने तुरंत, आपको घर लेने की कोई जल्दी आइडियली होनी नहीं चाहिए, बट देन जस्ट बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि अच्छा ठीक है लक्ष्मी चंचल है, अभी इसके पैर बांध देते तो इट विल बी सेफ, Yeah. तो कि कहीं भागेगी नहीं. सो जरूरी नहीं है कि आप उसको ईएमआई में ही बांधिए, आप उसको एसआईपी में भी कर सकते हैं. और जैसे अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो, फर्स्ट को अगर आपकी सैलरी आती है, तो आप ना थर्ड या फिफ्थ ऐसी एक एसआईपी डेट चुन लीजिए. सो आपको आपके एक्सपेंसेस के लिए पैसा कम ही बचेगा. So, these are all real life experiences that I have seen, and, I tell all my clients to do that. So, I would want to write a book which is practically possible. So looking forward to that book. I'm sure I need it, and so many other women, so many other Hmm. people. Why only women? I think so many people need to understand how to manage the money. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. एंड मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि हाउसवाइफ को ना एक झिझक महसूस होती है कि अरे मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कहाँ से इन्वेस्ट करूंगी. बट Correct. ट्रस्ट मी, आई वुड वांट टू ऐड चैप्टर्स टू द बुक व्हिच सेज कि इवन इन केस इफ यू आर अ होम मेकर, आपके पास एक मंथली एक्सपेंस होता है. उस मंथली एक्सपेंस में से हाउ इज इट पॉसिबल टू save some money and then use it in a wiser manner. How should you start with the basics, मतलब कि budgeting कैसे करना है. And I really don't mind telling and teaching my clients कि अच्छा ठीक है 10 लाख मतलब 1 million है करके. So right from the basic we will start. So that is how I want to begin my book with. And such a powerful thing you mentioned, that you don't have to be a big businesswoman, a CEO, CXO to be Absolutely earning no. or saving lots. And COVID Correct. really taught this to us, because I know so many homemakers realized all Hmm. cash that they had saved over Hmm. the years suddenly became useless because, it was the Correct. monetization had happened, and हाँ. and now they want to take it out. अच्छा, वो वाला currency तो अब चल ही नहीं रहा है types. Uh, Correct. 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 so yeah, I mean, if लेकिन women पता will है काफी benefit it, बार ये देखते हैं द women who save money in all these dabbas and everything, they are basically trying to hide the money from the husband. yeah. It's just that you don't tell the husband that you have this particular bank account. Like in my case, I know all the passwords of my husband's bank account. Ah, But he love it. doesn't know any of mine. So it's
You can also do this. You don't have to keep money in the dabbas. You Eh, start investing smartly so that he doesn't find it out. But this is a better way to do it. Totally agree. Totally agree. Since we are Mhm. talking about money, so I'm going to play a game with you, Harshada, and I Mhm, did mhm. this for that. So I'll give you two options और एक सेकेंड उनमें से कोई एक ऑप्शन चुनने के लिए. Okay. Yeah. Save first or spend smart. Save first. Wonderful. Um, Budgeting app or old school spreadsheets. Old school spreadsheets. Hmm. Gold or mutual funds. Mutual funds. Anything. Lovely. Um, Hmm. Tea while budgeting or coffee while investing. Tea while budgeting. Oh, मुझे लगा कॉफी बोलोगे कि आप रात में कॉफी पीते थे. No, tea because ek to I like tea, and more than investing, it is more important कि पैसा कहाँ से बचेगा कि वो investment में जाएगा. And this is something that I really find very challenging with women कि उनको ये समझ में नहीं आता है कि मेरे को invest करना है पर मैं पैसा लाऊं कहाँ से. तो वो जो पैसा आना है ना वो आपके budgeting से ही आएगा. So that is why budgeting is the Oh, first step for your investments. brilliant. So brilliant. Okay. Hmm. Fixed deposits or SIPs? SIPs. I, in fact, started my investment journeys with a recurring deposit. So when I was working with Citibank, my first job, I started investing 5,000 का RD. और फिर वो धीरे धीरे से समझ में आया कि यार आरडी में इतना पैसा नहीं बनता है एंड दैट इज व्हेन आई मूव टू SIPs. So Yeah, and once you start you start getting hang of it, you will know कि अच्छा कैसे करना है. बस वो एक शुरू का फर्स्ट स्टेप होता है जो थोड़ा सा मुश्किल होता है बट लेटर ऑन यू आर ऑन द जॉब. totally agree. Totally agree. Early retirement or working on passion projects forever. um Working on passion projects forever. I mean, I don't think this is the field that I like, and I don't think that I would any day want to retire. So, Retire से ज्यादा मुझे लगता है एक financial freedom होता है which allows you the freedom of making a choice कि आपको क्या करना है कब तक करना है, and that is what is more important to me. cannot. So I don't want to leave this field any day. And there is so much that is happening. Every day is a new news. कि अच्छा ठीक है इस कंपनी का ये हुआ उसका वो हुआ क्यों हुआ कैसे हुआ. And then if you are curious enough, you are going to enjoy this field. Absolutely So I think I really like doing this. wonderful. Emergency fund or travel fund? Emergency fund. Arre वाह, अरे वाह. I'm sure people are getting lots of insights in terms of how to manage the money. So let's talk a little bit about money. Yeah, you Hmm. speak so passionately about financial literacy. Why is this such a core mission and passion for you? See, I don't want any women out there. Okay, I'll start from the basic. The reason that I named my company as Dignity Management is because, दो समय होते हैं कि जब हमें पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है. एक होता है कि जब आप रिटायर हो चुके होते हैं. तो रिटायर होने के बाद ना आप अगर अपने बच्चों से पैसा मांगोगे ना तो वो अच्छा नहीं लगेगा, ना आपको अच्छा लगेगा ना आपके बच्चों को अच्छा लगेगा. सो इट्स अ matter of your dignity. So that is why that's one of the reasons that I named my company as Dignity Management, so that you can manage your own dignity with your retirement money. And how should one plan for that? That is one thing. Another time that in case if in the absence of the male member or the earning member, how should you manage and navigate through the entire journey? That is also very important. And this is, I started doing this from COVID with an idea to reach out to more people. I already had a company in place. I was doing everything very well. The reason that I started posting everything online is because I realized that there is a gap कि there are a lot of women out there who don't know anything about finance. काफी बार क्या होता है ना कि हम लोग जब किसी फैमिली गैदरिंग्स में जाते हैं तो पहले तो हस्बैंड वाइफ एंड द एंटायर ग्रुप इज सिटिंग टुगेदर कि Yeah. बात कर रहे हैं, सारी चर्चा चल रही है, एंड देन
धीरे क्या हो जाता है ना कि बच्चे अपना ग्रुप बना लेते हैं एंड देन द हस्बैंड स्टार्ट मेकिंग देयर ओन ग्रुप। द मोमेंट दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट फाइनेंसेस या स्टॉक मार्केट एंड शेयर मार्केट, अचानक लेडीज को याद आता है कि अरे मैं ना सब्जी गर्म करने के लिए रखती हूँ, फिर एक कहती है अच्छा मैं रोटी गर्म कर देती हूँ, या मैं सलाद काट देती हूँ, मैं प्लेट्स लगा देती हूँ। Why? I would want women to sit through the conversation and understand and hear more about money. आपको आज समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, पर धीरे धीरे तो समझ में आने लगेगा ना। जैसे अगर आप स्विमिंग सीखने के लिए जाते हो, फर्स्ट क्या होता है कि आप पहले पानी में उतरते हो एंड यू एंजॉय द वाटर, दैट इज समथिंग दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। फिर धीरे धीरे वो कोच सर आपको जो है कि पैर मारना सिखाएंगे, फिर हाथ मारना सिखाएंगे। पहले बहुत दिन तो वो सिर्फ और सिर्फ पैर मारना ही सिखाते हैं, एंड देन धीरे धीरे जब आप स्विम करने जाओ तब आप डीप में जाते हो। सो आई थिंक इट हैज टू बी लाइक द सेम जर्नी, कि धीरे धीरे समझ में आएगा, बट देन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू सिट थ्रू द कॉन्वर्सेशन टू अंडरस्टैंड। यू कैन नॉट जस्ट बिकॉज आपको पता नहीं, आप हमेशा ये नहीं कर सकते अच्छा मुझे इसमें का कुछ समझ में नहीं आता है, माई हस्बैंड टेक्स केयर ऑफ द finances or investing. It's all right, he has been taking care of, but then you start participating so that you learn about it. It's a journey. Beautiful. You have to start feeling uncomfortable to start to learn. कोई भी चीज जब Yes, पहली बार करते हैं, श्योर अनकंफर्टेबल लगता है। शादी तो 50 correct, बार करके फिर शादी नहीं करते ना, जब पहली बार शादी करते हैं तो भी हाँ, अनकंफर्टेबल लगता है। कोई भी काम पहले करेंगे अनकंफर्टेबल लगेगा। correct, ब्यूटीफुल, correct. ब्यूटीफुल। Harshita, now that we are talking about finance matters, I think a lot of it depends on how we raise kids Hmm. who are thinking financially, financial independence, who are thinking finance stuff and matters. So what practical Hmm. tips do you Hmm. have for parents who really want to raise financially aware children? हम्म। सो मुझे ऐसा लगता है समथिंग दैट हैपेंड रियली ग्रेट विथ मी इज कि माय पेरेंट्स डिड अलाउ मी टू स्टार्ट हैविंग एंड हैंडलिंग मनी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इवन विथ सहर्ष, लाइक इफ योर किड्स आर बिटवीन द एज ऑफ 5 to 7, you should introduce money to them. Start giving them pocket money. ये मैं एक बार नहीं, मैं बहुत बार कहती हूँ कि आप बच्चों को पॉकेट मनी दीजिए, be it 20 rupees, be it 100 rupees, it's all right. Let them go and order their favorite burger at McDonald's, कि आपको समझ में तो आ जाएगा। अगर मैगी पसंद है तो आप 20 रुपए की मैगी आती है, आप 100 रुपए दीजिए, देखिए तो बच्चा 80 रुपए वापस लेके आ रहा है या नहीं। काफी बार क्या होता है कि हम बच्चों को ना कहीं बाहर नहीं भेजते हैं, आप स्कैर्ड फील करते हो कि पता नहीं कैसे जाएगा सड़क पे और ऐसे। पर जब हम लोग छोटे थे ना तो हमारी मम्मी हमको भेजती थी कि जाओ जाके दूध लेके आओ या जाओ जाके प्रेस के कपड़े लेके आओ। सो दिस दिस taught us कि हाउ टू बी अराउंड पीपल और हाउ टू कम्युनिकेट। आपका बच्चा 18 साल का है और वो किसी से बात नहीं कर रहा है, फार्मेसी पे जाके अगर वो दवाई लेता है तो वो तत ही स्टार्ट्स टू स्टम्बल बिकॉज ही डजंट Yeah, नो हाउ टू कॉन्वर्स। yeah. But then, and your child is not shy, your child is not confident enough to make a conversation because you never allowed him to do this since the beginning. तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ना पैसा देना चाहिए, पॉकेट मनी देनी चाहिए, छोटे छोटे। और देयर इज नथिंग दैट कम्स फॉर फ्री। अभी जैसे समर्स आने वाले हैं, यू आस्क योर चाइल्ड टू फिल इन ऑल द बॉटल्स and keep them in the refrigerator, and this is like something that I don't like to do, so that's why I pay Saharsh a pocket money कि बेटा आप कर दीजिए। और वो बहुत खुशी खुशी करता है, वो मतलब ही वेट्स कि कब वो Chocolate बॉटल खाली खाली मिले। होगी और कब मैं, हाँ, कब मैं पानी भर के रखूंगा, आई कैन गेट मनी फॉर दिस। सो एंड Okay. इट्स एन एक्टिविटी फॉर हिम एंड And दे आर ऑल्सो earning एंगेज्ड। that's to earn money, you have to work. Yeah, Yeah, how this beautiful. is the idea. Nothing is going to be available for you for free, so you have to work for it. I want to listen more So else. What are the tips? So, okay, so now the other thing that I do is, I ask him to clean his own room, so that I can pay him for that. And there are छोटे छोटे टास्क कि ओके अगर समर वेकेशन आ रहा है तो आप दिन में एक ड्राइंग बनाइए, मतलब आप कुछ भी बनाइए पर आप बनाइए। सो दिस विल डेवलप अ हैबिट इन हिम। दिस इज हाउ you inculcate the habit of being productive, learning a new skill, एंड ऑल्सो दैट कि अच्छा ठीक है इससे आपको रिटर्न में कुछ मिलेगा भी। सो दैट्स द होल आइडिया। आप अपना बैग भर के रखिएगा। से फॉर एग्जाम्पल अगर किसी दिन आपकी हेल्प नहीं आती है तो कोई बात नहीं बेटा, पर अगर आप
पता है कि अच्छा आप इस डाइनिंग टेबल पे खाना खाने वाले हो, तो आप उसको क्लीन करके रखिए। या अब जैसे हम घर पे आते हैं तो वो एक ग्लास पानी लेके आता है कि कि अरे मम्मा आप थक के आई होगी, सो आई कैन डू दिस फॉर यू। सो दीज आर स्मॉल थिंग्स एंड किड्स दे ऑब्जर्व एंड देन लर्न। आप कितना भी बच्चे को बैठ के सिखा के लेक्चर दीजिएगा, दे आर नॉट गोइंग टू लर्न, बट दे विल ऑब्जर्व व्हाट यू आर डूइंग, एंड दैट्स हाउ दे लर्न। So we have this habit of reading a chapter or book before we sleep. So my husband does that, I do that. तो मुझे लगता है Saharsh has also inculcated this habit. So now he knows कि नहीं सिर्फ टीवी नहीं देखना है, सोने से पहले एक किताब पढ़ेंगे and then we can sleep. So Yeah, that is how you raise readers. So wonderful. ये छोटी छोटी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं. So So, this anniversary what happened that कि uh, मेरे पास भी समय नहीं था एंड सुमित ऑल्सो डिड नॉट हैव टाइम, वी थॉट दैट कि लेट इवनिंग में हम कहीं डिनर के लिए जाएंगे. सो दैट वाज द होल आइडिया, बट देन सहर्ष सेड दैट कि नहीं नहीं दोनों की एनिवर्सरी है एंड बोथ ऑफ देम आर बिजी, वी वर रियली बिजी सिंस द मॉर्निंग. तो उसने क्या किया, ही हैड सेव्ड पॉकेट मनी, सो ही हैड द मनी. ही कॉल्ड माय गाय फ्रॉम द ऑफिस कि भैया आप प्लीज मेरे मॉम डैड के लिए केक लेके आइएगा. पैसा अनफॉर्चुनेटली वो भूल गया देना बट उसके पास पैसा था कि मेरे पैसे से, एंड देन ही टोल्ड हिम कि मम्मा डैडा को पता नहीं चलना चाहिए कि आप लेके आ रहे हो और मैंने आपको बोला है करके. सो ही अरेंज द एंटायर थिंग, बट देन ही फॉरगॉट टू गिव द मनी. सो देन द एम्प्लॉय कॉल्ड मी कि मैम ऐसा ऐसा है, प्लीज आप सहर्ष को मत बताइएगा कि मैंने आपको फोन करके बताया है. एंड देन व्हेन आई वेंट होम आई फाउंड दैट मनी लाइंग ऑन द टेबल कि अच्छा पैसा था उसके पास पर वो देना भूल गया. yeah, तो देना भूल गया. So yeah. he was so sweet of him that so he's very thoughtful about all these things. So I think that's very good. Two things I'm taking away from this, Harshada. One is positive reinforcements. उन behaviors को आप reward करिए जो आप बच्चे में inculcate Correct. करना चाहते हैं. Saving, हाँ. spending right, taking care of others. उसके लिए अगर आप monetary rewards भी देते हैं, so that encourages. And as parents, be that role model that they look up to. And because children are always copying their Correct. parents. Yeah, so be that role model that they can look up to. Wonderful. Correct. Since you're so passionate about women and their Hmm. literacy, what are your tips for parents of daughters? How can they, groom very empowered, financially strong girls? ओके. तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट टुडे अराउंड मनी और ओवरऑल जनरली इन लाइफ इज बिकॉज ऑफ माई डैड. डैड ने कभी भी मना नहीं किया किसी चीज के लिए. वट एवर परमिशन दैट आई एवर आस्क्ड हिम इट वाज ऑलवेज अ यस. सो दैट इज समथिंग दैट हैज ऑलवेज हेल्प मी बी and become the kind of person that I am today. एंड इट डजंट स्टॉप हियर. जब हम विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं तो मुझे लगता है कि सो माय हस्बैंड फ्रॉम यूपी, सो पीपल इन यूपी आर जनरली वेरी कंजर्वेटिव, बट it's not the same with my family. My father-in-law is very very great, so he is a retired CMO. And I remember कि उनके यहाँ पे ना एक reunion party हो रही थी and it was organized at our place. So the way I and he were interacting, उनके फ्रेंड ने उसको जस्ट टू रीअश्योर पूछा कि यार ये तेरी बहू है या तेरी बेटी है. एंड देन ही वेरी कॉन्फिडेंटली सेड दैट कि बहू होगी तुम्हारी, मेरी तो बेटी है. सो दिस इज द काइंड ऑफ एम्पावरमेंट दैट वी थिंक वी शुड हैव. और द अदर डे व्हेन आई वाज फॉर सम रीजन मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो नॉर्थ से आते हैं और सुमित के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो वेस्ट की तरफ से आते हैं. So I went to Lucknow and I did all my meetings and I was back home by around 6:37. And उसके बाद मैं किचन में जाके खाना बना रही थी एंड माय फादर इन लॉ इज लाइक कि अरे ये क्यों किचन में खाना बना रही है, ये तो सुबह से पहले ऑफिस जाके आई है, पूरा घूम के आई है, मीटिंग्स भी, अब ये किचन में खाना भी बनाएगी. मैंने कहा नहीं नहीं पापा, मैंने ही कहा था कि मुझे आज खाना बनाना है, आई एम गोइंग टू मेक पाव भाजी फॉर एवरीबडी. तो दैट इज वाई. सो this gives you a boost, कि there is somebody who's there to support you. Another thing that I would like to ask you is कि आप मुझे शादी जी बताइए कि 3 बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की जिनकी शादी हुई हो and which are like top of the town. Talk of One is somebody who is based out in the US. Alia Bhatt है, what is her name? Deepika Padukone है, and Correct. um, Priyanka Chopra is Chopra. one. हाँ. Correct.
and then there is Anushka Sharma. Yeah. So इनकी शादियों में ना समथिंग दैट वाज कॉमन वाज कि इनको ना कभी अपने डैड से पैसा नहीं मांगना पड़ा कि you should have funds for my wedding or you should give funds for my wedding. So nowadays I don't discuss this topic with parents ki or a goal with parents ki daughter's wedding should not be a part of the discussion of a financial goal. बिकॉज मुझे लगता है कि आपको जितना पैसा खर्च करना है ना आप अपनी डॉटर्स की एजुकेशन के ऊपर खर्च करिए. दिस वुड बी अ ट्रू एम्पावरिंग योर डॉटर्स सो दैट दे कैन हैव अ करियर and they can manage their expenses on their own, and they don't have to depend on a male figure to do that for them. So I sincerely feel ki parents of daughters should spend a lot of amount on daughters education rather than planning for their wedding. So this is one thing that I truly feel. और Can't जैसे agree more. Yeah. है ना, और जैसे मैं देखती हूँ कि जैसे गवर्नमेंट जो है हमारे लिए कितनी सारी चीजें करती है फॉर विमेन स्पेशली. पर मुझे ऐसा लगता है ना कि देयर आर सो मेनी विमेन इन इंडिया की जो आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर प्रेगनेंसी पर्टिकुलरली दे आर एजुकेटेड, दे आर करियर ओरिएंटेड, बट काफी बार ऐसा हो जाता है कि motherhood is like something to be celebrated. You should be happy that you're going to be a mother. तो और ये मेरे साथ में हुआ है इसलिए मैं बता रही हूँ कि माय टीम मेंबर केम एंड टोल्ड मी दैट कि मैम आई एम एक्सपेक्टिंग एंड आई वाज सुपर हैप्पी फॉर हर व्हेन शी हैड जॉइन्ड द कंपनी. शी हैड सेड कि आई एम नॉट प्लानिंग फॉर अ फैमिली एज ऑफ नाउ एंड एवरीथिंग, बट देन शी थॉट दैट कि अगर मैं मैम को बताऊंगी तो वो बहुत गुस्सा होंगी कि आगे का अरेंजमेंट कैसे रहेगा. But then trust me, I was so happy and she was happy to see that कि oh my God, she's so happy. तो मुझे ऐसा लगता है कि हम विमेन ना अपने करियर को कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस देती है ये सोच के, एंड देन वी आर नॉट एबल टू एंजॉय दैट प्रेगनेंसी जर्नी और दैट वुमेनहुड. आई जेन्युइनली फील कि गवर्नमेंट भले ही 6 महीने का आपको मेटर्निटी लीव दे रही है पर फिर उसके बाद हम करें क्या. दे शुड मेक अ प्रोविजन फॉर दैट. दिस इज समथिंग हम बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक मौका चाहते हैं. चौका तो हम मार ही देंगे. वी आर करेजियस इनफ, वी आर Love केपेबल that. इनफ, वी कैन डू इट. सो Huh. इट्स जस्ट दैट हमको ये 2,500 रुपए जो आप दे रहे हैं वो हमको नहीं चाहिए. यू गिव अस मोर अपॉर्चुनिटीज. देयर सो मेनी women who are educated who want to go back to career, but because they have kids at home, चाहे आप पार्ट टाइम कुछ दीजिए या वर्क फ्रॉम होम वाली फैसिलिटीज दीजिए, but then we are educated and we can work. It's just that we are looking for that opportunity. Opportunity, and glad that you use the word opportunity because it's not just career. We are not here to say कि हम अपने बच्चों को घर को डंप करके हम लोग करियर पे फोकस करेंगे, नहीं. हाँ, Want to absolutely use no. that beautiful balance between करियर भी उतना ही important है जितना Correct, बच्चे, जितना फैमिली, जितना relationships. How correct, powerful, correct. how powerful. I Yeah, love and that. no और women, कर see दीजिए, when we आप talk. कर देंगे. या एब्सोल्युटली. जब हम कहते हैं ना कि 5 years इज अ माइलस्टोन फॉर द बेबी टू बी कि नाउ ही और शी कैन बी ऑन देयर ओन. तो 5 साल का करियर गैप के बाद ना आपको आप कैसे दोबारा से अपनी करियर स्टार्ट करिए. और हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि आप अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी 5 साल के बाद या एक गैप के बाद स्टार्ट करें. वी वुड वांट टू गो बैक टू वर्क, वी वुड वांट टू हैव दैट कल्चर कि ठीक है ऑफिस जा रहे हैं एंड एवरीथिंग. तो मुझे लगता है कि सरकार को हमारे लिए ना ऐसी अपॉर्चुनिटीज बनानी चाहिए कि जहां से हम दोबारा से अपना करियर स्टार्ट कर सके. तो आई जेन्युइनली लुक फॉरवर्ड टू I दिस. hope this message reaches some या ears who या are able to action करेक्ट. this. Yeah. So my next question to you is, what are some of the myths women still believe about money, and how do you help them rewrite that script in their head? ओके. मनी इज नॉट माई कप ऑफ टी एंड मनी इज समथिंग मैं पैसा नहीं मैनेज कर सकती या नहीं हैंडल कर सकती. दिस इज अ ह्यूज मिथ दैट women वर्क अराउंड. आई टेल यू कि कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है शी इज अ वुमन. हम हमारे घर का बजट है जो हम ही मैनेज करते हैं. वी नो हाउ टू डू इट, वी नो कि हम कहाँ पैसा बचा सकते हैं. इट्स जस्ट दैट कि एवरीथिंग हैज टू go back to that paper and pen to note down everything, and that is where you're going to find answers to all your questions कि पैसा कहाँ से बचेगा और कैसे बचेगा. and then the next step will come कि कि इसको हमें कैसे इन्वेस्ट करना है. and I would really love to help
any woman out there to find that out, to figure that out. We will sit through, we'll discuss all the bank statement, all the credit card statement, and find a way out. Just, I'll be very happy to help you. So just reach out. Absolutely. I'll be sure to ensure that your contact details are there listed in the podcast that you Definitely. publish. Yeah. Yeah. Harshada, can you share a story or a client experience that you can recount as a big transformation that you brought about? This is more about an inspiration story for me. So I had met this woman. She's basically from Nasik, and she earlier in her time used to work in Mumbai. और मुंबई में एक बहुत रेप्यूटेड प्राइवेट कंपनी में वो जॉब करती थी. जब उनका रिटायरमेंट हो गया, ऑल शी वांटेड वाज somebody to plan her retirement, as in she was already investing, so SIPs उनकी बहुत पहले से चल रही है, and she has a very wealthy corpus for herself. All she wanted was a proper asset allocation and a pension plan, like a SWP plan for herself, कि कैसे मैं अपने monthly expenses को take care कर सकती हूँ इसके बाद में. I got extremely inspired by the woman because कि उस time पे जहाँ पे women were probably not going to office or wearing saris and all that, वो वाला era में she ensured that कि वो invest करती रही without a second thought कि बस पैसा डालना है. Instead of doing a recurring deposit, she invested in SIPs. And then आज के डेट में all she needs is a SWP, systematic withdrawal plan, जिससे उनका monthly expenses चलता गया. So this is an inspirational story for me कि women knew that time also. I wished that कि एक लेडी दूसरी लेडी को ये बताए कि कि यार तू ये भी कर सकती है. जब हम कहते हैं ना फ्रेंड्स को कि अरे नहीं नहीं तू चल मेरे साथ करके, मैं हूं ना, मैं तेरे को ले चलती हूँ करके. सो काश ये स्टोरीज उस टाइम पे भी होती कि कि आप अपनी फ्रेंड को लेके आइए कि नहीं चलो हम चलेंगे करके. जैसे हम कीर्तन भजन के लिए लेके चलते हैं कि नहीं नहीं चलना है करके, वैसे ही इसके लिए भी कराए तो इट वुड बी सो मच बेटर. सो दैट इज वन थिंग. अनदर थिंग इज कि जब व्हेन people come back to me कि हर्षदा जी वी हैव अचीव्ड आवर फाइनेंशियल गोल, या मेरी डॉटर की वेडिंग के लिए मैं पैसा बचा रहा था, एंड दिस इज वेयर आई हैव बीन एबल टू अचीव इट बिकॉज ऑफ यू एंड योर टीम. सो आई फील वेरी हैप्पी कि चलो यार किसी का गोल तो हमने मीट कर दिया. सो काफी सारे लोगों की पर्सनल स्टोरी बिकम्स एन अचीवमेंट फॉर मी कि आई हैव बीन एबल टू take them through the entire journey. So that is what is inspirational for me. Totally relate to that. Totally relate to that. Mm. So, Harshita, are you up for some fun questions? Yeah, of course, of course. Please go ahead. Yeah. Okay. If your wallet could talk to you, what would it say Mhm. about you? I need more. Arey wah. Okay. Um, what's that one impulse purchase that you don't regret? Um, I don't buy anything impulsively. I am very strict that way. Unless I really need it, I don't buy. Lovely. Okay. The next one is going to be a little bit tough, but let's see. Yeah. If you could simplify one financial concept into a 10-second reel, what would that Hmm. look like? Okay, the best investment advice that I would give anybody is to start their investment journey as early as possible. So that's the best advice. और मार्केट का कोई टाइम नहीं होता है, जब आपने सोचा तब वो शुभ टाइम होता है स्टार्ट करने का. Wonderful. Hmm. What's that one money myth that you enjoy busting for everyone? I don't understand anything about finances. Ah, Hmm. hi, hi. Hmm. If you wrote a financial fairy tale for kids, Hmm. Hmm. what would the fairy tale be called? Um, पैसों की रानी. Arey wah. Hmm. That's it for women. I am so enjoying this. I'm so enjoying this. Um, what's one thing which you felt is expensive, but you felt I'm worth it? I want to spend this on myself. Diamonds.
Ah, good. You can I say I bought I you know I bought my first set of diamonds for myself from my salary. कि नहीं, I don't need a man to buy them for me. I'll buy it for myself. one. And I went and I showed it to my dad. कि देखिए ये मैंने अपने से खरीदा. Until then my dad had never bought diamonds for me. So I had gold, but that was the first thing that I bought for myself. So And beautiful. I am keeping them. I want to gift my first pair to somebody who is extremely special. So I am simply waiting for that moment. I'm sure you will get that moment and many, many, many more. Hmm. So, as we are coming to the close of this podcast, a couple of questions that I really want a as detailed as possible answer from you. The first Mhm. one is, what does financial freedom mean to you personally? I think financial freedom to me is the choice that I can make with the time that I have. And of course, whom do I want to help out? And it is more about that. The choice that I can make, कि in case if I have enough money or the passion that I want to continue with, how do I do that? So that is what is financial freedom that means to me. And what would be your advice to women specifically, but people in general, those who believe they are not good with money, they don't know how to manage money, what should their Hmm. first step be? See, if you get the idea कि आपको पैसे के बारे में कुछ नहीं पता है, you just probably reach out to us और get the idea कि आपको किसी की मदद की जरूरत है. So the moment you have that idea कि अच्छा, you are somebody who needs help, then there are a lot of people out there to help you out. And you just have to simply reach out to them. And I'm always here to figure out everything for you to help you out. And we'll have long conversations ना कि क्या आपके goals क्या है, how should and where should you begin from. So that is where we will start, right from your bank account to everything that has to be there in place. I'll ensure everything is done till your estate planning. Wonderful. So the only need is one, I need to be aware that I want to manage my Mhm. money better and I'm Mhm. willing to seek help. Those are Yes, as only it is the realization that you need help, and this is something that you're not able to do it alone. Just say, if say for example कि if you have your high diabetes, ठीक है, and you have to understand that कि अच्छा ठीक है ये control नहीं हो रहा है. That is when you go out and you reach out to a dietitian to consult, कि how do I get everything in place, or the idea of getting your medical checkup done कि कुछ तो गड़बड़ है पर क्या गड़बड़ है समझ में नहीं आ रहा है. तो द फर्स्ट स्टेप इज यू रियलाइजिंग दैट यू नीड हेल्प is something that is more important. lovely, lovely. One last question. What's in Mhm. store for Harshada in the next 5 to 10 years? I only want to help people, and I would always want to help women out there who feel that कि ये समझ में नहीं आ रहा है, and I'll be very happy to help you out. That's my only goal. That's my only mission, that I want to empower women with the knowledge of finance, Lovely. that Wishing you can all do your it on wishes your own. come true. I wish this podcast, your discussions, your organization reaches as many women as you possibly can handle. So enjoy all the wishes coming your way. I'm sure Thank you. I found it very, very valuable, Harshada, to have this conversation. I'm sure everybody who will be listening to this is going to find value, and I hope lots and lots of people reach out to you. Definitely, definitely. Thank you so much, Shanti. And it was a wonderful time being with you, talking so much about finance and so much about the book. I So love thanks a lot that. for having me. Thank you.